I know you play poker. Yeah, I know you're a fan. Yeah. And I'm a huge nut. Oh, really? I think the only Dude, you did an interview with Daniel Negreanu, no, I did, recently. yes. Yeah. Yeah, I saw clips of that. That's awesome, man. I know. So you went to his house in Yeah. Vegas, right? That's fucking insane, Bro, dude. I mean, the perks of my job is I can DM somebody and then be hanging out with them afterwards. क्या बात है? Literally crazy, हाँ. और मैं उसको ऐसे ही मजाक में DM कर दिया. उसको मेरे को उसका प्रोफाइल दिखा Instagram पे. I was like, अभी तो Instagram पे भी है. I DM'd him. I was in the US. He's like, come over. And we drove down from LA to Vegas, 6.5 hours. Fucking insane, dude. Parked our car right outside his house. His house is beautiful. We played heads up. I won. क्या I'm बात allowed है? to say. I don't think it's a fair contest, but I won. Because हम लोग 20-25 minute time लगा के खेल रहे हैं so that we can हाँ, start so the you conversation. probably got a good run of cards and... Eventually it got push and I think I had king queen suited. He had 8s and I hit a queen. ऐसा okay, होगा. yeah. तो Alright, ठीक है. cool, yeah. So it's not really technically winning, but what a fucking thing to meet a hero that you have That's in insane. a subculture. That's insane. Yeah, man. That's... Right? That's killer. I felt like that, but only in comedy. Like I've met a lot of comedians that I've looked up to. But I know that feeling. Yeah. I know that feeling of like, "Bhanchod, ye kaise ho gaya?" Or being able to even call somebody that you've known at such a distance your friend. Yeah. Like sometimes when I compare what life was 2 years ago and what it is now, I'm like, this has to be a fucking joke. Like, Yeah. be real. Yeah. ये हो रहा है हमारे साथ, right? But the only thing that puts me out of my misery, because I am max ambition, max anxiety, and max obsession. तो मेरा दिमाग ना नॉन स्टॉप इट्स जस्ट दैट इट टेक्स मी मेनी डेज टू चेक आउट ऑफ इट व्हेन आई एम ऑन हॉलिडे कि अब तू काम नहीं कर रहा, जस्ट ब्रीथ एंड इट्स जस्ट आई एम रियलाइजिंग आई एम लाइक माय फादर इन मेनी वेज. The only thing that puts me out of my misery is poker. Oh, The really? So only you thing. play quite regularly then? 2-3 times a week. Nice. Okay. But for 2-3 hours only. Yeah. Right? And it's the only thing that makes me feel like कि अब पर मैं अब काम ऑनलाइन कर- तो नहीं है ना? नहीं we friends will get Ah, together. okay, nice, Yeah, nice, yeah. nice. I have only like 8-10 friends only that I'll play with. मेरे को कहीं जाके भी खेलने का शौक नहीं है. गोवा जाके. भाई That's not my thing. अब्रॉड कभी कसीनोज में खेला है क्या? गोवा में मैं रहते हुए भी कभी कसीनो ना जाऊं, इतने बेहुदा हाल है अंदर. Right, यार, थोड़ा मैंने सा- बाहर से बस लोग देखे अंदर जाते हुए मैं कहा इन भोसड़ी वालों के साथ नहीं खेल रहा नहीं मैं पर पता है यार, actually they're decent poker players. Like you'd be surprised. Poker सही खेलते हैं. Of मैंने course, बाकी of नहीं course, देखा. हाँ. मैं भी एक ही बार गया हूँ. पर जो total. वाइब्स है ना वहाँ पे, जो लड़कियों को ताड़ना और जो दारू में पी पी के उल्टी करना, Right, जो कुर्सी पे हक देना क्योंकि इतने एडिक्टेड हो कि टॉयलेट तक नहीं जा पा रहे, यू नो, ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं. दिस इज ट्रू भाई. ये रियल बात है. ये होता है casinos में. छत पे जाओ cruise के. वो शादी वाली कुर्सियां लग रही होती है. भाई बुरे हाल है यार. टेंट वाला लाया कुर्सियां लगाने का. भाई मैं तो लेकिन अब्रॉड व्हेनेवर आई गो ना, अगर मैं अकेला गया हूँ अब्रॉड, अगर कोई साथ नहीं है तो फिर मुझे पता है जैसे इफ आई हैव टू मेनी डेज इन अ सिटी, लाइक अगर मैं मेलबर्न में हूँ फॉर इंस्टेंस, मेरा शो सैटरडे को है, ठीक है, पर मैं मंडे से हूँ, कितना मेलबर्न देखूंगा. अब हर 2 साल में आना भी होता है और सारा कुछ देख भी लिया है, तो फिर दिन के 4 घंटे में क्राउन कसिनो में पोकर तो बनता ही है, चाहे जो हो जाए. You're a full like you enjoy that, huh? Yeah, I love that shit. And the thing is, because you meet cool people, you meet people over there who are not addicted at all. They're actually doing it like a healthy hobby in the same way that you're doing it. And everybody is interested in like the game. It's Yeah. not so much about the money or anything like that. So you meet really cool people. Right. And तब बड़ा मजा आता है खेलने I में. grew up playing chess, competing in chess for 10 years of my first 15 years of my life, like very early, ठीक है? And so strategy and this kind of stuff was very early to me. Nice. And somebody told me only like 5 years ago or 4 years ago something like कि तेरे को पोकर अच्छा लगेगा because it's strategy. Yeah. And I was like, bro, मेरे को ना ये जुआ हुआ मत खेला, पत्ते वत्ते साले भाई बाहर में जा. same, yeah. ठीक है? And then I did play it and I realized कि this is math plus psychology plus statistics Plus a little bit of luck. हाँ, and sufficient luck. Yeah. Sufficient A reasonable amount of luck. हाँ. But the entire episode becomes very fun. When Yeah. you're talking to people, you're playing with them, you're seeding lies, you're telling them the truth. But my sense is a lot of life is actually like poker in the sense that you have incomplete information. You have to make a best decision. Possible, and yeah. keep moving forward. Yeah. Or मेरे courage matrix में of how I approach life and how courageous I am, I learned a lot about being calm under uncertainty and yes. pressure from this. Yeah, and also, dude, one thing that really stuck out to me that you told me just now. Yeah, give it to is, him. Thank you. Huh. Is the fact that you have to make the best possible decision, but then the aspect of living with that decision is It's so hardcore, is boss. all that poker is about. Yeah. अगले दिन सुबह you were thinking of that hand कि मैंने क्यों कर दिया यार वो. As long as you know that at any given position you did the right thing based on the information you had, you have to be okay with it regardless of the outcome. Exactly. And that is the way in which it mirrors life in its most like truest manner, you know. It does. Yeah. You And just then even evaluating, अच्छा, this is how confident I feel.
And this is how I want to communicate this confidence. And so it is true. The fact that they exist in the same casino area lends itself a bad or a worse image. And I'm not denying, I know some fucking degens, boss. जिनसे रुका नहीं जाता वो चिप की आवाज सुन के, ठीक है? But I have thoroughly enjoyed it as a process of understanding. पहले 1 साल जब मैं पोकर खेलता रहा भाई, मेरे से ना ब्लफ होता ही नहीं था, क्योंकि मेरे को डर लगता था. और मैंने एक दिन अपने आप से बोला, भाई तेरे को झूठ बोलने में क्या डर है? अच्छा, फिर बहुत झूठ बोला, पैसे हार गया. फिर लाइक अबे झूठ भी तो सभ्यता से बोले जाते हैं. एंड सो यू हैव दिस इंटायर matrix of strategy you learn within yourself, about the world and how you interact with it, that I would not have come across. I'm not recommending you do this, by the way. Because please, मेरे को इसमें कोई legal liability नहीं चाहिए. कल को तुम पैसे हार गए. And India can be like that. देखो, नहीं खेलते तो मत खेलो. हाँ, मत खेलो भाई. मत ही खेलो. पर जो खेलते हैं. I'll tell you also, I think there's a slice of people who are addicted to gambling who don't know it. And when they discover it in any form, it becomes, जैसे I've known guys भाई जो ना जैसे बचपन में क्रिकेट पे खेलते थे, ठीक है, एंड देन दे ग्रो अप एंड यू सी अ वेरी एडिक्टेड, अनकंट्रोल्ड, इम्पल्सिव पर्सन ईदर प्लेइंग समथिंग लाइक अ पोकर और व्हेन दे आर इन कैसीनोज कि समझ ही नहीं आ रहा, फेंक रहा है पैसा, फेंक रहा है, उसे समझ ही नहीं आ रहा, एंड यू फील बैड. यू लाइक भाई मैं इसलिए नहीं आया था यहाँ, हाँ वही कि मैं तेरे पैसे ले जाऊं. दैट्स नॉट द पर्पस. मैं 2000 रुपए कमा के कोई खुश नहीं हो जाऊंगा. करेक्ट. प्लीज डोंट बी लाइक दिस बॉस. यू शुड नॉट बी अराउंड दिस शिट. Yeah, exactly. You're ruining your life, man. Yeah, you're ruining your life. Yeah, like exactly. The exposure to, because it's a circuitry in our neurology. This prediction, uncertainty, and then confirmation is a neurocircuitry. It can get exploited for a lot of people very quickly. 100%, dude. Like I decided to stop playing poker for that reason. मैं अभी नहीं खेलता हूँ. But मुझे एक चीज़ realize होने लग गई कि ये एक लाइन क्रॉस कर रहा है. नॉट इन टर्म्स ऑफ मैं कितने घंटे लगा रहा हूँ इसमें, या ऐसा भी नहीं कि मैं पैसे हार रहा था बहुत. मैं ओवरऑल काफ़ी अच्छे खासे प्रॉफिट में ही चल रहा हूँ पोकर से. पर मुझे एक चीज़ रियलाइज़ होगी एक टाइम पे कि ये अब एक जो पैटर्न की आप बात कर रहे हो ना, वो पैटर्न मेरे काम के अंदर इनबिल्ट है, ठीक है, तो मैं अपना काम क्यों नहीं कर रहा. But basically it's the same amount of luck variability and yes, information. मैं घर पे बैठ के लिख रहा हूँ, मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि ये चलेगा, और मैं बोल रहा हूँ कि मुझे तो अच्छा लग रहा है ये. द सेम वे आई वुड लुक एट अ हैंड इन पोकर एंड बी लाइक दिस. या एंड उसके अंदर जो रिवॉर्ड्स हैं वो इतने ज्यादा बड़े हैं. नॉट जस्ट इन टर्म्स of course doing stand up professionally is far more profitable than playing poker, but that's a different thing. You know what I mean? I'm not talking about those rewards. I'm talking about feeling like you made something good. Having people agree with that, you know, feeling good about yourself, about your own ability to perform the thing that you have chosen to give your life to and to make your career, you know, like those things are so much more valuable, and they scratch the same itch for me that poker does. And so I had to make a conscious decision to be like, I have to remove this from my life. Interesting. बहुत हो गया. Gosh. जब तक Gosh, you're making me reflect. हाँ. Like my plan is कि मैं World Series of Poker main event खेलूंगा. Damn, let's do it. लेकिन अभी नहीं. You know, बहुत कुछ करना रहता है. You know, मैंने पहले सोचा था कि the moment I can afford to play it, I'll play it. It's what 10K USD. Yeah. 10K. And now I'm like, I can. बट नहीं यार, नहीं, इस हालत में मैं वहां जाके ये नहीं कर रहा, ठीक है. इट जस्ट फील सो स्टूपिड कि इतना सारा प्रूविंग योर सेल्फ रहता है अभी, और तुम जाके वहां पत्ते खेल रहे हो. यू नो व्हाट आई मीन? लाइक आई एम स्टिल टू ड्रिवन बाय द थिंग्स दैट आई फील लाइक आई वांट टू अचीव. I purely played with friends. Like my only purpose is hanging out with the same set of people, talking shit and being distracted from work for a brief while. Dude, 100%. That's it. उसके लिए तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है. And if you can do it like that, that's great. मेरे केस में क्या होता है ना कि अगर मैं महीने में 1 बार खेल रहा हूँ या महीने में 2 बार खेल रहा हूँ तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा. मैं हफ्ते में 3 बार खेलने लग गया ना, तो फिर मैं ऑनलाइन भी खेलना चाहूँगा. फिर वो मेरे दिमाग में जगह ऑक्यूपाई करने लगता है. I know what you mean. वो मॉडरेशन मेरे से एक ही हद तक रहती है. ऑनलाइन तो बिल्कुल कोई सेंस नहीं बनता. अब तो खैर वैसे ही बैन हो गया. बट इफ आई हैव टू प्ले समथिंग ऑनलाइन फॉर सिमिलर इफेक्ट, आई प्ले चेस. फाइंडिंग चेस बडीज इज हार्डर ऑफलाइन. Okay, yeah, finding chess buddies is way harder offline. पर ऑनलाइन तो बहुत लोग होंगे. It's infinite. Yeah. So then, like when I'm touring and I'm on long bus rides or car drives or whatever, I'll play a lot of chess. Same purpose. Ki now my mind is explicitly focused on this. And it's strategy. It's applying yourself. It's, you know, muscle move. Guys, trust me. I cannot give you the beauty of this conversation in just this one clip. If you like this clip, then you have to go to our main channel and subscribe to it and press the bell icon because we post some amazing conversations for you on that channel.